Good morning, students. Today we will discuss about the methods of reducing levels. This means that the methods for calculating the elevations of points from the observed staff readings. So basically, there are two methods. One is the height of instrument method, and the other one is the rise and fall method. Height of instrument method we have discussed in the previous class also. We'll just quickly look at what is height of instrument method. So in height of instrument, if we have the terrain like this, we will set up the instrument at some location, and if this is the benchmark, the point of known elevation, we'll set up the staff here, and this is the instrument we have set up, the instrument here. So the height of this instrument, the height of this line of sight of the instrument will be known as height of instrument. So we will take a backside at this, we will take the backside at the benchmark, and we know the elevation of benchmark. RL of benchmark is known. So RL of benchmark plus backside will give the height of instrument. This will be the height of instrument. Height of instrument will be RL of benchmark, elevation of benchmark plus backside. And so this will give height of instrument. So now if we want to calculate the elevation of any other point, suppose this point A, this is the staff. We'll set up a staff at this point and take the staff reading here. So if this staff reading comes out to be H1, so now the RL of A will be height of instrument minus H1. So this way we can calculate the method RL of any point using this method of height of instrument method. So, or if we want to find out for any other point, say point B, we will set up the staff at this point B, and height of instrument minus this H2 will give RL for B. Suppose we want to change the instrument, so instrument change जब करेंगे, suppose यहाँ पर रीडिंग लेनी है कोई, at some point है जहाँ पर अगर ये सी पॉइंट पर रीडिंग लेनी है, जहाँ पर इस वाले इंस्ट्रूमेंट सेटअप से यहाँ पर इसे नहीं देख सकते हैं पॉइंट सी को, तो फिर हमें इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो लास्ट पॉइंट जो हम जहाँ पर हमने बी पॉइंट लिया है, बी पॉइंट पे स्टाफ रखे रहने देंगे और इंस्ट्रूमेंट को इस पोजीशन से यहाँ पर पोजीशन सेकंड पे सेटअप कर लेंगे। इस पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप करके फिर बैक साइड ले लेंगे इस पॉइंट पे। तो इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद सबसे पहले जो रीडिंग होती है उसे बैक साइड कहते हैं। तो बी पॉइंट पे बैक साइड लेंगे फिर से। तो पॉइंट बी का एलिवेशन हमें ऑलरेडी पता था, तो पॉइंट बी का एलिवेशन प्लस जो बैक साइड आएगी, दैट विल बी द न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1 फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट सेटअप। तो पॉइंट सी का एलिवेशन कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1 माइनस ये जो भी H3 रीडिंग आएगी। तो हाइट RL, अगर RL ऑफ पॉइंट सी विल बी height of instrument, the new height of instrument, height of instrument 1 minus H3. So this is how we can calculate. This is the simplest method,
height of instrument method that we use for calculation of elevations or reduced levels. Now, this is what we have discussed here in this section. Height of instrument. Here we have set up the instrument at some location A. So backside has been taken for first station, and then height of instrument is known. The backside plus plus backside plus benchmark is height of instrument. So we have calculated the this reduced level for is given for benchmark. So we draw this type of table. So for next reading, first we take the backside and then foresight. The first reading for any station is backside, and the last reading is foresight for any instrument setting. So this is how we have done the calculations. But we do this arithmetic check. Arithmetic check is sum of all the backside minus sum of all the foresight is equals to should be equal to last reduced level minus first RL. So this difference between the last and the first RL should be equal to the sum of foresight difference between the sum of backside and foresight. So this is the arithmetic check for this method. Now there is one more method which is rise and fall method. Basically, what is rise and fall method? Here we we calculate the difference between backside and foresight. Backside minus foresight. We take backside and foresight. So if this backside minus foresight is negative, that means there's less level has reduced. We call it fall. And if the backside minus foresight is positive, that means the elevation has risen. So we note it down under the head rise. So for example, so for a terrain like this, so if we take backside here, and foresight at this location, we take suppose at point location A and B. So if we will take this for location A, we will take backside. For this setting, we will take backside come and backside, suppose backside comes out to be 2.100, and foresight for A comes out to be 1.75. So for A, backside minus foresight will be positive. So that means it will come under rise. There is a rise of level. And suppose for B, it will be some 2.30, something like this. So for B, backside minus foresight will be negative. So it will be fall. So how we do it? RL of benchmark plus minus fall. अगर fall हो रहा है तो minus कर देंगे, rise हो रहा है तो add कर देंगे. This minus fall in elevation will give the RL of the next point. Similarly, 559 minus 0.555, which is the fall, it will be 58. So for this point,
इंटरमीडिएट साइट अगर कहीं पर ले रहे हैं, कोई इंटरमीडिएट साइट है, तो बैक साइट माइनस इसको चेक कर लेंगे 1.025 माइनस 1.580, गेट दिस वैल्यू। तो इसमें भी अरिथमेटिक चेक एक लगाते हैं। अरिथमेटिक चेक क्या लगाते हैं? सेम सेम सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड शुड बी इक्वल टू सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल, और लास्ट आर एन माइनस फर्स्ट आर एन। So this is how we check that the calculations or readings taken are right. Correct. So we can compare the two methods. Height of instrument method is more rapid, less tedious, and simple. We have just seen. Check on the calculations of intermediate site is not available in height of instrument. The rise and fall method provides a full check and calculation for all sites. Now there is one more thing called profile leveling. Basically, profile leveling what we carry out for the survey that is done for road, or level of roads or railways. What we do in profile leveling, suppose the road has to be constructed like this. So the length is very large. The length is very large, maybe multiple kilometers. So what we do is we set up the instrument at a one particular position from which we can take a lot. We can take many readings. We'll set up the instrument here, and we have to take readings, say every 500 meters or every 200 meters. So we will take, suppose this is our benchmark somewhere. So first of all, you will take the reading at benchmark, backside, and then you will take intermediate sides for all the points, maximum number of points. जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हम रीडिंग ले सकते हैं, जहाँ तक भी हो जाएगा, जहाँ तक लाइन ऑफ साइट जाएगी, वहां तक उसमें यहाँ पर स्टाफ रख रख के रीडिंग्स ले लेंगे। बस स्टाफ की पोजीशन चेंज करते जाएंगे, रीडिंग लेते चले जाएंगे। बैक साइड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस जो भी यहाँ पर रीडिंग आएगी, हाइट ऑफ स्टाफ रीडिंग। सो दिस इज कॉल्ड प्रोफाइल लेवलिंग, जहाँ हम बस एक बार बैक साइड लेटा, इंटरमीडिएट साइड लेते चले जाते हैं। जहाँ पर कहीं टर्निंग पॉइंट आएगा, जहाँ पर हमें इंस्ट्रूमेंट चेंज करना होगा, उस वाले पॉइंट को हम फोर साइड, सपोज यहाँ इसके बाद हमें ये लास्ट पॉइंट दिख रहा है, इसके बाद हमें वो चेंज करना है इंस्ट्रूमेंट, तो इसको इसी को फोर साइड कह देंगे। फिर इंस्ट्रूमेंट अपना ये और बीच में कहीं सेट कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट सेट करके तो यहाँ पर पहले बैक साइड लेंगे, देन इंटरमीडिएट साइड फिर से लेते चले जाएंगे। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रोफाइल लेवलिंग। अच्छा, ये तो एक काम होगा कि इसमें प्रोफाइल लेवलिंग में हम अलोंग द रोड, डायरेक्शन ऑफ द रोड, मिड पॉइंट, या फिर अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक, अगर रेलवे है तो यहाँ पर सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक में रीडिंग्स लेते चलेंगे। इसमें एक और चीज होती है क्रॉस सेक्शनिंग। क्रॉस सेक्शनिंग में किसी एक रोड के, ये सेंटर लाइन अगर रोड की है, तो हमें रोड के एक सेंटर पे भी पॉइंट चाहिए होता है, लेवल चाहिए होता है, एक एंड पे पॉइंट चाहिए होता है, दो एंड्स पे चाहिए होंगे, या फिर कभी इंटरमीडिएट पॉइंट चाहिए। तो ये लेवल लेने को इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनिंग, जहाँ पर हम इसका लेवल फाइंड आउट करेंगे, इन पॉइंट्स का फाइंड आउट करेंगे। मतलब एक ही क्रॉस सेक्शन पे, एक ही सेक्शन पे अलोंग द क्रॉस सेक्शन, इसको अलोंग द विड्थ ऑफ द रोड चार पांच जगह लेवल लेंगे। मे बी तीन जगह भी हो सकता है, सेंटर पे, दो एंड्स पे, या फिर कभी इंटरमीडिएट पॉइंट पे हो सकता है। चार जगह लेवल लेंगे, तो इससे हमें पता लगता है कि हमें कितनी कटिंग या फिलिंग करनी पड़ेगी क्रॉस सेक्शन के लिए। You will see ये प्लान भी दिख रहा है।
ये हम यहाँ दिखा रखे हैं प्रोफाइल लेवलिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर L1 पे एक बार इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया, एक बार L1 पे इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया, फिर L2 पे सेट कर दिया, फिर L3 पे सेट कर दिया, और बस इसमें इंटरमीडिएट साइट लेते रहते हैं। एक बार बैक साइड लिया, उसका जब तक पॉइंट चेंज नहीं करते तब तक इंटरमीडिएट लेते रहते हैं, इंटरमीडिएट साइट से लेते रहते हैं। उसके बाद ये डिस्टेंसेस प्लॉट कर सकते हैं कैसे, और फिर क्रॉस सेक्शनिंग करते हैं। क्रॉस सेक्शनिंग के लिए टेबल जब बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं 3 पॉइंट्स ले आया, एक ही स्टेशन पे 0.0 पे एक सेंटर पे पॉइंट लिया, सेंटर पे रीडिंग ली, एक लेफ्ट में एक राइट। यहाँ हमने 3 पॉइंट ले रखे हैं, L1 L2 L3, लेफ्ट में 3 रीडिंग, फिर राइट में 3 रीडिंग, सेंटर में एक रीडिंग। इस तरह से जैसी भी रिक्वायर्ड होगी रीडिंग को लेते लेंगे। और इंटरमीडिएट साइट्स सारी आती हैं। ये चेनेज जो है ये अलोंग द लेंथ जो ये जीरो ये एक ये 0 मीटर चेनेज पे एक ही पॉइंट पे रीडिंग ले रखी है, ये 0 मीटर चेनेज पे लेफ्ट राइट पे 3 रीडिंग्स आ गई, और 20 मीटर चेनेज पे 0 मीटर 20 मीटर 40 मीटर, ऐसे कितने मीटर लेते हैं एक ही पॉइंट एक ही चेनेज पे एक ही डिस्टेंस पे अलोंग द क्रॉस सेक्शन 3 पॉइंट या 5 पॉइंट जैसे रिक्वायर्ड है, 7 पॉइंट जैसे ले रहे, तो यहाँ पर हम प्लॉट कर लेते हैं। तो कुछ इसमें अगर बैलेंस बैक साइड फुल साइड को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर गिवन है। तो अगर सेम if when the difference in elevation between any 2 points is determined from a single setup by backsighting on one point and foresighting on the other, the error due to non-parallelism of line of collimation and axis of bubble tube may be eliminated if the lengths of the two sides can be made equal. So the ये method given है, the observed backside and foresight are x1 and x2. The correct backside on a1 on a is equals to x1 minus y1, where y1 is equals to d1 tan alpha 1. क्या ये कह रहे हैं कि अगर जो बबल ट्यूब का एरर है, ये यहाँ पर हम रीडिंग ले रहे हैं 2 पॉइंट्स पे, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है, तो इस एरर को हम रिड्यूस कैसे करेंगे, कैसे रिड्यूस कैसे करेंगे। तो अगर ये डिस्टेंसेस को इक्वल कर देंगे तो द डिफरेंस बिटवीन बैक साइड एंड फोर साइड will eliminate this y1 and y2. So this is one method given here. Some of the errors have been discussed here, which can be instrumental errors. कई तरह के हो सकते हैं, error due to imperfect adjustment, error due to sluggish bubble, error due to movement of objective slide. So this is one of the important parts. लेवलिंग में कई बार कई तरह की डिफिकल्टीज आती है, जैसे अगर स्टीप स्लोप होता है तो लेवलिंग में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया तो ज़्यादा डिस्टेंस तक जा ही नहीं पा रहे, एक ए पॉइंट पे बैक साइड लेंगे, यहाँ स्टाफ उससे उससे अगर और ज़्यादा आगे जाएंगे, ये जैसे बी पॉइंट पे लिया और ऊपर जा रहे हैं स्लोप पे, तो ज़्यादा अगर स्टाफ ज़्यादा आगे रखेंगे
तो उसमें क्या होगा, स्टाफ फिर वो स्टाफ में रीडिंग ही नहीं हो पाएगी, इससे ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं ले पाएंगे रीडिंग ऐसे केस में। या सेम सेम प्रॉब्लम आएगी अगर समिट्स है या वैलीज हैं, तो वहाँ पर जो बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स अगर नहीं लेंगे तो फिर ये रीडिंग नहीं आ पाएगी, तो स्लोप स्टीप होगी। सिमिलरली इन दिस केस, यहाँ पर पॉइंट ए पे रीडिंग ली, पॉइंट बी पे स्टाफ इतना नीचे चला जाए फिर रीडिंग आ ही नहीं पाएगी, ये रीड ही नहीं कर पाएगा, उस वाले पॉइंट पे तो ले लेंगे। अब ऐसी एक प्रॉब्लम है कि अगर हम तो ऐसे जैसे समिट में अगर ऐसे केस में रीडिंग लेनी है, और कभी होता है कोई ओवरहेड पॉइंट है उसकी रीडिंग लेनी है, तो कैसे लेंगे? एलिवेशन इसका पता करना है, बेंचमार्क पता है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता करनी है। बेंचमार्क जो नोन है वो एलिवेटेड पॉइंट है, ओवरहेड पॉइंट है। तो क्या करेंगे, स्टाफ को यहाँ पर उल्टा रख सकते हैं, इस पॉइंट से यहाँ पर स्टाफ, ये स्टाफ है, स्टाफ को उल्टा रख देंगे इस ओवरहेड पॉइंट पे, और ये मेजर कर लेंगे एक्स डिस्टेंस। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल बी दिस बेंचमार्क माइनस एक्स, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, कई बार होता है पॉन्ड्स है या लेक्स है, वहाँ पर लेवलिंग करनी है, तो जैसे पॉइंट, तो ऐसे में हम इसको ये हम इसको जो मान सकते हैं कि वाटर का जो लेवल है वो सेम होगा एट दिस पॉइंट ए एंड बी। जब मानेंगे इसको, तो अगर हमने सपोज इस वाले यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसका एलिवेशन निकालना है, इस पॉइंट का एलिवेशन पता है ए पॉइंट का यहाँ पर, तो एक एलिवेशन ए का निकाल लेंगे, एक एलिवेशन ऑफ ए पता लग जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, यहाँ पर स्टाफ रख देंगे तो इस पॉइंट पे। सिमिलरली इस पॉइंट बी का, ए बी, लेट्स मेक इट 1 and 2। पॉइंट बी का एलिवेशन, पॉइंट बी का एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट 1 विल बी नोन। अच्छा, इस पॉइंट का और ए पॉइंट का एलिवेशन सेम होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में फिर एलिवेशन ऑफ 2 निकाल सकते हैं। तो ऐसे अगर पॉइंट के अक्रॉस लेवलिंग करनी हो तो ये मेथड यूज कर सकते हैं। बहुत हाई वॉल बीच में आ रही हो तो हम दो इन्वर्टेड स्टाफ रख सकते हैं दोनों तरफ, एक वॉल है, वॉल के एंड में इन्वर्टेड स्टाफ रख दिया, और इसकी रीडिंग यहाँ पर ले ली, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसके और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दोनों तरफ। तो ये टॉप ऑफ वॉल का बेसिकली, टॉप ऑफ वॉल का एलिवेशन पता लग जाएगा, है ना, स्टाफ उल्टा रख दिया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से टॉप ऑफ वॉल का एलिवेशन आ जाएगा, इधर इसमें एक्स माइनस कर देंगे तो दूसरी तरफ का इन्वर्टेड आ जाएगा एलिवेशन। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जो कि फील्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें अकॉर्डिंगली हम मेथड्स यूज करके एलिवेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। So that is all for leveling. You should go through the numericals that are given in these notes.